यूनुस साहब से समझना चाहूँगा, प्लीज टेल अस हाउ डू यू कनेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग? Well, let me make a confession. I'm no poet. So You are like me. yeah, I'm an academic, and I know him as an archivist, and I know him as a researcher. And I think, what people have said no better than I have said in not in detail. But I think the thing is that, he is part of what we call a counter-narrative. What people don't want in Pakistan to talk about, what people in Pakistan don't want to remember, and what people in Pakistan don't want to speak in which language is part of that counter-narrative. What people don't want to remember, they say forget about all this junk that he has in his archive. They don't want to remember the past. They want to construct the past in the present image. That what a Pakistan ideology is, that how the past should be restructured to fit this narrative. So he is an obstruction to that, because he collects and says, look, this is what the past said. When he talks about research, he talks about all the areas where the narrative says don't bother about. Don't bother about ordinary people, bonded labor, religious minorities, Balochistan, minors. He roped me into that conference to talk about religious minorities, but that's my weakness. But what people shouldn't talk about, he puts his finger and says, this is what we need to talk about. And finally, it's the language which he talks in. People say, don't talk about Punjabi. What is Punjabi for? Ye daga wala zaban hai. He speaks in Punjabi, and he puts that point where all the people in the elites don't want to talk about. And I think that's what actually I found very, very important in engaging with him. I know him in lots of different ways. I keep meeting him in different things. But I think that's the important spark, that in the darkness there is a light. Yeah. And he is part of that light. इसलिए मैं देखूं कि क्या कोई है ऐसी बात जो कहने से रह गई? आप कुछ हैं? शुक्रिया जी। मुझे मलिक जावेद साहब ने इन्फॉर्म किया था कि आज यहाँ बड़ी अच्छी गैदरिंग हो रही है। I'm not poet, just like जावेद मलिक साहब ने आपसे कहा, आप आ गए, जावेद मलिक साहब नहीं आए। शेर क्या एक उस शेर का आधा याद रह गया कि मुझे भी बुला के कोई छुप गया। बस यही इसी किस्म के मिसरे सुनने के लिए। अहमद सलीम साहब तक पहुंचने से पहले एक शेर अहमद सलीम साहब का मैं इनके नजर करूंगा, और ये शेर मैं पहली मर्तबा जिंदगी में रिटायरमेंट के करीब कल रात पढ़ा मैंने। तो और शेर अच्छा वो होता है जिससे लगे कोई बम छूटा है शायद कहीं। तो शेर है कि क्या हिज्र क्या विसाल तेरी जात एक है, क्या हिज्र क्या विसाल तेरी जात एक है, मौजूद मैं रहूं न रहूं बात एक। अहमद सलीम साहब, मैं अब शमा आपके सामने रखता हूँ, और क्या बहुत सी बातें बताई मैंने। गलत ये कि जो इस वक्त हमारा इवेंट है, इस पर जो फेसबुक पर मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो अपने आप में एक प्रेजेंटेशन का मुहताज है। तो उसमें से अगर कोई एक चीज जो आपको छू गई हो वो बता दें। हम सुनने वालों में नहीं, ये सुन्नी शिया का अल्फाज है। सुनने वाले भी होने चाहिए। अच्छा जी, ये हमारे एक सिंधी दोस्त हैं, सिंध पाकिस्तान का एक प्रोविंस, सिंध में वो इमदाद चांदियो उनका नाम है, और वो पुराने जब मैं भी स्टूडेंट था तो उस वक्त हमारे वो स्टूडेंट लीडर थे। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन एक तंजीम हुआ करती थी,
और आजकल वो जामशोरो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो उनका एक मैसेज मैं, क्योंकि वो एक ऐसा पहलू है वो अभी तक शायद सामने भी सच नहीं आया इस डिस्कशन में, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लिश में है तो मैं उसको ऐसे पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में लिखते हैं जी, We can never forget those evenings at Jamshur with him when he was there to translate poetry of Sheikh Ayaz from Sindhi language to Punjabi language. We regard Ahmad Salim as a great person who united Sindhis and Punjabis from a linguistic and cultural point of view, and he has rendered great service for both Sindhi and Punjabi language. He is a connector between two Indus Valley nations on the basis of creative art and poetry. Ahmad Salim is a rare man and a staunch political worker who stood for democracy, who stood with us when we observed Balochistan Day in Zulfikar Ali Bhutto's government in Punjab University, where our student Jalsa was disrupted by goons of right-wing extremist student group Islami Jamiyat Talaba, and government-sponsored People's Student Federation. He raised voice from Punjab for smaller nations in the same way as did Habib Jalib, an Awami poet and contemporary of Faiz Ahmad Faiz. Ahmad Salim has remained a staunch progressive writer committed to ideals of equality of nations in Pakistan, and an honest writer who relied on his earnings from his hard work of writings and translations only. He is a silent soldier, but fought bravely in the reigns of dictatorship. So और भी messages थे, लेकिन मैंने सोचा एक ये बहुत शुक्रिया। मैं एक और बात भी मतलब जावेद साहब की तैयार करना चाहूँगा कि नज़र साहबा को मैंने पहली दफ़ा वो पाक साहब की तरफ से मुशायरा हम मतलब किया गया था, वहाँ आपको मैंने सुना था। तो मलक जावेद साहब ने जी भी आपका भी नाम किया था कि आप भी इधर आई हुई हैं, जो इस वक्त मैं प्रोसीजर देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, यानी कि आप अपना कलाम पढ़ चुकी हैं। अच्छा अभी नहीं पढ़ा, ओके। क्योंकि सदर मैं समझा इसमें ये जो तरतीब है इसमें कोई न सदर है न सेक्रेटरी है जी, और न सामने।